औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर चैनल के जाने से मैं आपका होस्ट मोहम्मद उमैर आज न्यू वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हैं, जिसमें MCM 401 GDB सोल्यूशन 2020 का आ चुका है। तो इसके वाले से हमने बात करनी है। इसमें सबसे पहला सवाल आता है कि एन अथेंटिकल एड इज़ वन ऑफ विच डूज नॉट लाइक डूज नॉट मेक फेक और फॉल्स क्लेम्स एड इन इट क्लेमेंट डिसेंस। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले तो गाइज मेरा आपसे सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाले हर न्यू वीडियो की अपडेट फौरन मौसूल हो सके। चलिए हम अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं। Nowadays, ads are more extend. A lot of proofing is used. It seems like advertising knowledge, ethical norms, and principles. They just do not understand or are unable to decide what is correct and what is wrong. The main area of interest advertising to increase their sales, gain more and more customer, and increase demand for product by presentation well recorder. Puffed and colored ad. They claim that their product is best, having unique qualities, computers more cost effect. The more beneficial, but most of these ads are found to be false, misleading customers unethical. The best for the guide the use coloring and glazing to make product look luxurious, attractive customers who are watching ad on television and convince to buy the product without giving a second thought out। तो जी हाँ दोस्तों, जिससे तरह अभी मैंने पूरा मुकम्मल सोल्यूशन आपको पढ़ के भी बता दिया। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, यूट्यूब के वेब डेवलपमेंट के लेक्चर क्रिएट हो चुके हैं, तो आप वेब डेवलपमेंट के लेक्चर भी वॉच कर सकते हो। आज एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा वेब डेवलपमेंट का, तो आप वॉच करके उसको बता सकते हो कि उसमें मिस्टेक है या नहीं है, यानी आप उसे पसंद करते हो या नहीं करते। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, उसे भी वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।